CBSE Mathematics Class 12 Exercise 4.5 Question number 12. Let A, that is matrix 3725, and B 6879 verify that A, B means the inverse of AB is equal to inverse of B into inverse of A. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट ए निकाल लेते हैं. देखिए 3 5 जा 15, 2 7 जा 14, सो 15 माइनस 14 दैट इज 1. इट इज नॉट इक्वल टू 0. एंड डिटर्मिनेंट बी 6 9 जा 54, 7 8 जा 56. So 54 minus 56, that is minus 2. Minus 2 is not equal to 0. So these two indicate that the A inverse and B inverse, inverse A and inverse B exist. Now first of all we find out the AB, the product of AB. You see the 3, 7. 3 will be multiplied to 6 and 7 will be multiplied to 7. So now 18, 49. Similarly, the first row will be multiplied to the second column, that is 3 into 8, 24, 7 into 9, that is 63. Now the second row, 2 will be multiplied to 6 and 5 will be multiplied to 7, so 12 plus 35. 2 will be multiplied to 8 plus 5 will be multiplied to 9, so 16 plus 45. इसको सिंप्लीफाई किया और 67, 87, 47, 61. फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए बी मीन्स डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए बी दैट विल बी इक्वल टू. अब हमारे को ए बी मिल गया है, इसका हमने मल्टीप्लाई कर दिया 67 इंटू 61 माइनस 47 इंटू 87, दैट विल बी इक्वल टू 4087 माइनस 4089. It will be equal to minus 2 and it is not equal to 0. This indicates that the inverse of AB exists. Hence the adjoint of A निकालने के लिए क्या करेंगे हम, 3 and 5 मीन्स लेफ्ट टू डाउन वाले जो एलिमेंट हैं इनका प्लेस को इंटरचेंज कर देंगे. 5 will go to the 3 and 3 will come to 5. Here you see here. And left to up में केवल जस्ट you have to change the sign, minus 2, minus 7, that's all. So adjoint of A is complete. Now adjoint of B. Similarly here, you just change the places, 9 और 6 का mutually interchange कीजिए place. You will get 9 here, 6 here, and change the sign of left to up. That is minus 7, minus 8. So it will be the adjoint of B. Similarly, adjoint of AB. एडजॉइंट ऑफ ए बी में भी इंटरचेंज कीजिए प्लेस. 67, 61 है, 61 विल गो टू दिस प्लेस एंड 67 विल कम हियर. सिमिलरली फॉर 47 इट इज प्लस, सो इट विल बी माइनस. इट इज प्लस, सो इट विल बी माइनस 87. सो इन दिस वे वी विल कंप्लीट द एडजॉइंट ऑफ ए बी, ए एंड बी. एंड वी हैव ऑलरेडी वर्कड आउट द डिटर्मिनेंट वैल्यू. सो फाइंड आउट द इनवर्स ऑफ ए बी. Inverse of AB will be equal to 1 by minus 2 into adjoint of AB, that is 61 minus 87 minus 47, 67. अब हमने क्या किया, ये जो माइनस 2 है माइनस 2 से डिवाइड कर दिया हर एक को. देखिए यहाँ पर क्या आएगा, माइनस 61/2. माइनस हट जाएगा, माइनस इधर है, so minus minus will be cancelled. 87/2 आ जाएगा. Here 47/2 minus 67/2. This will be our first equation. The B inverse will be minus 1/2, you can say. Inside the matrix sign it will be 9 minus 7 minus 8 6. So 2 से डिवाइड कर दीजिए पहले. So you will get here 9 by minus 2, 4, 7/2 minus 3. Now inverse of A, that is
इट्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू 1 है तो 1 से डिवाइड करेंगे तो देयर विल बी नो चेंज इन इट, दैट मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इज देयर. So 5 minus 7 minus 2 3, that will be 5 minus 7 minus 2 3. Now the B inverse A inverse means inverse of B into inverse of A हमने लिखा और इसको मल्टीप्लाई कर दिया. देखिए माइनस 9/2 and 4 will be multiplied to 5 and minus 2. We will get here minus 45/2 minus 8, 63/2 plus 12, 35/2 plus 6 minus 49/2 minus 9. Further solve किया, we got minus 61/2, 87/2, 47/2 and 67/2. This is our second. So from first and second, फर्स्ट में ये है और सेकंड में ये निकला है हमारा. So from first and second it is verified that inverse of product AB will be equal to the inverse of B into inverse of A. Now come to the question number 13. If A is equal to 3 1 minus 1 2, so that A square minus 5A plus 7 into identity is equal to 0. Hence find inverse A. पहले हम A स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं. यहाँ पर A स्क्वायर है तो A स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए क्या किया हमने, देखिए A इंटू A कर दिया. So that is 3 1 1 minus 1 2, 3 1 minus 1 2 का मल्टीप्लाई किया. We got 9 minus 1, 3 plus 2, minus 3 minus 2, minus 1 4. इसको फर्दर सॉल्व किया. We got 8 5 minus 5 3. This is our first equation. And minus 5A means 5 minus 5 will be multiplied to the A. That is A value is written here. This is the 3 1 minus 1 2. So minus 5 will be multiplied to every element in the matrix case. So minus 15, minus 5, 5, minus 10. This is our second equation. Now the 7 into identity matrix, that is 7 0 0 7. This is our third equation. On adding first, second, third, we had 8 5. देखिए minus 5 3, minus 15 5, minus 5 10 plus 7 0 0 7. अभी इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम प्लस कर देंगे. कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हर एक जो हैं 2/2 ऑर्डर के हैं. सो एडिशन का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो फुलफिल कर रहा है. सो 8 प्लस माइनस 15, देखिए 8 minus 15 plus 7, minus 5 0. minus 5 3, minus 5 plus 5 plus 0, minus 5 plus 5 0. 3 minus 10 plus 7, 3 minus 10 plus 7. इसको फर्दर सॉल्व किया. वी गॉट 0 0 0 0, दैट इज 0. हेंस प्रूव. नाउ हमारे को इन्वर्स निकालना है, इन्वर्स ऑफ ए निकालना है. सो डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए इज 6 plus 1, दैट इज 7. 7 is not equal to 0, therefore inverse of A exists. So adjoint of A will be equal to, देखिए अब इंटरचेंज कर दिया. 2 minus 1 1 3. Therefore the inverse of A will be adjoint of A upon determinant value of A, that is 2 minus 1 1 3 divided by 7. So 1/7 complete. So this will be the answer of the question number 13. Now come to the question number 14. For the matrix A, that is 3 2 1 1, find
the number A and B such that A square plus small a capital A plus B into identity matrix is equal to 0. हमने क्या किया, A स्क्वायर की वैल्यू निकाला, A into A, that is A into A. First of all write down 3 2 1 1 3 2 1 1. Multiply किया, we got 9 plus 2, 6 plus 2, 3 plus 1, 2 plus 1. Further simplify किया, we got 11 8 4 3. Now small a into capital A, that is A will be multiplied to 3 2 and 1 1. You see here every element has been multiplied by A, that is 3a 2a a. This is our second equation. B into I means identity matrix, so B I have written outside. Inside the bracket you see 1 0 0 1 or 1 0 0 1, you can say. So we got here B 0 0 B. So first, second, third. Now adding first, second, third, we had on adding first, second, third, we have 11 8 4 3 plus 3a 2a a b 0 0 b. अभी हमने जब इसको प्लस किया तो क्या रिजल्ट मिला देखिए, 11 प्लस 3a प्लस b, 8 प्लस 2a प्लस 0, 4 प्लस a प्लस 0, 3 प्लस a प्लस 5 b. So now we will equate it to 3a plus b plus 11, 2a plus 8, a plus 4, a plus b plus 3 is equal to 0 0 0 0. Now equate the corresponding elements of these two equal matrices. So we will get 3a plus b plus 11 is equal to 0, means 3a plus b is equal to minus 11, 2a plus 8 is equal to 0. Further solve किया, a is equal to minus 4. Here a plus b is equal to 0. In place of a I have written minus 4. 4 minus 4 plus b plus 3 is equal to 0. So b minus 1 is equal to 0. B is equal to 1. So a is equal to minus 4. B is equal to 1. That's all.